Hello everyone. Yes, beta. Yesterday we have revised the adjectives and their forms. Er forms we have revised. We have revised er form: clean, cleaner; thin, thinner; easy, y cut, easier; heavy, y cut, ier, heavier. Today we will learn about est forms. Okay. I have told you in live class that when er verb come, if it is come with than. बेटा जब ये than के साथ आती है, cleaner then we will write er verb. Okay. Now today we will do est forms. ठीक है. Clean, cleaner, cleanest. Same spelling, cleanest. We will write est. Thin, thinner, thinnest. Same spelling, est we will write. Easy, easier, easiest. iest. We will cut y and we will write iest. Heavy, heavier, heaviest. और ये est वाली फॉर्म्स कहाँ आती हैं? ईयर फॉर्म्स आती हैं when we are talking about two. When we are talking about two. Okay? We are talking about two. Long, longer. ठीक है. Now, if we will talk about more than two, then we will take est verb. Okay? जब हम कहते हैं सबसे लंबा, सबसे छोटा, बहुत सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, so many things or so many persons are given and we will the question is asked which one is the longest. इतनी सारी में से आपने सबसे लंबा निकालना है. ठीक है. तो here we will write longest, est. Fine? Yes. Wait. Now, if we are talking about like 1, 2, 3, out of these 3 girls we have to find longest girl. Means इन तीनों में से सबसे लंबा कौन है? Longer देखो, it is long, she is long, but she is longer than first girl. ये क्या है? फर्स्ट गर्ल से लंबी है, बट दिस इज लॉन्गेस्ट. दिस इज लॉन्गेस्ट. देयर हेयर आर लॉन्गेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. हर हेयर आर लॉन्गेस्ट मीन्स सब में से लंबे हैं. फाइन. अब est वर्ब की पहचान फॉर्म की पहचान कहाँ होती है? est फॉर्म कहाँ आता है? किसके साथ आता है? द के साथ आता है. द लॉन्गेस्ट. फाइन. द लॉन्गेस्ट. अब लॉन्गर के क्या निशानी होती है? लॉन्गर देन. अब देन आ जाए तो वी विल राइट er फॉर्म. द आ जाए तो वी विल राइट est फॉर्म. ओके. नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ द सेम. फर्स्ट वी विल read this. Fat, fatter, fattest. Hot, hotter, hottest. Narrow, narrower, narrowest. Simple, simpler, simplest. Okay. Now we will do book exercise. Underline the adjectives in the sentence that show comparisons. What you have to do? You have to underline the adjectives जो हमें बता रहे हैं कंपैरिजन के बारे में. चलो. सिद इज यंगर दैन समीर. आपने देखा ना यहाँ पर दैन आया तो दैन के साथ क्या आएगा? यंगर. तो यंगर क्या है हमारी? कंपैरिजन एडजेक्टिव. यंगर. येस्टरडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर. अब देखो हॉटेस्ट द आया तो द के साथ कौन सी लगाई हमने? est फॉर्म. द हॉटेस्ट. तो हॉटेस्ट हो गई कंपैरिजन. The house with the brown roof is bigger than. Bigger than हो गया the one with the blue roof. Next one is a kitten's fur is is softer than a lamb's wool. Softer. अब दो की बात करके we are talking about two things and we are doing comparison. Then आ गया तो then के साथ which form we will write? er. Softer. Joy is the आ गया funniest. द के साथ est फॉर्म. than से पहले er फॉर्म. ओके. these are the comparison adjectives. Now
Question number 3. Circle the correct adjective in each sentence. ठीक है. And now you have to check where if then will come, we will write er form, and if the will come, we will write est. A giraffe is taller, tallest than आ गया. Yes, then ना, तो we will write er form. Than an elephant. Now the river Ganga is longer than the river Yamuna. Then has come, so we will write er form. Bunty is older, oldest, then, again then. So what we will write? Older or oldest? We will write older. Where then will come, we will write er form of the comparison. Potatoes are tasty, tastier than carrots. Again, tastier. Now, the cheetah is the faster animal. Look, here then will not come. Then has not come. Then nahi aaya yahan. Here the come. So what we will write? est form. The fastest. Is it clear, beta? Where then will come, we will write er form. Where the will come, we will write est form. Okay, these are the comparison adjectives. Please do this in your book and revise these adjectives. Yes beta. Okay bachcho, goodbye.